Hello, everyone. A very good afternoon to all. Just wanted to confirm whether my voice is audible to everyone or not. Hello, everyone. A very good afternoon to all. Okay. It seems that my voice is audible, crystal and clear to all. Just give me like 30 seconds. I'll get back to you and we're going to start this session. Okay. So first of all, thank you so much for joining this webinar. We're going to discuss about how to make a resume in this session. Now, many students were curious to know about this resume session part because till today also, there are many students who are finding difficulties in making their own resumes. Some people are still confused between what exactly the resume is and what exactly the CV means to us. Also, what is the ATS, applicant tracking system, which has been implemented by many corporate companies, and how to crack that ATS so that our CV gets shortlisted in coming rounds. So this session would help you to understand how to make your resume, how to make your resume impactful, and how to crack that ATS round so that our resume will comfortably go ahead for the further rounds. Always remember that this resume always help you to crack a rounds and ultimately will give you the job. So I can see many people are joining here on our YouTube platform. I would request everyone to please do subscribe to our YouTube channel so that the further coming webinars details will be sharing on this YouTube platform only. If someone is not joined our YouTube and WhatsApp group, I would request them to please do join our WhatsApp group and subscribe to this YouTube channel. So let's begin with our presentation. So we're going to take this session in a bilingual part. So we'll have somewhat discussion in Hindi and English mix up so that everyone would be able to understand our discussion. तो ये resume making का जो session है, we have started it like 5 years back and continuously we are taking this session. We are also helping many students to, correct their resumes, and we find it very difficult because there are very silly mistakes that has been happening with the students resume part. तो छोटी छोटी जो चीजें रहती है वो अभी तक बच्चे समझ नहीं पाते कि किस तरह से उसे क्रैक करना है. लिंक्डइन का प्रोफाइल डालना हो या करियर ऑब्जेक्टिव का स्पेलिंग हो, मैरिटल स्टेटस डालना हो या हॉबीज हो, स्टूडेंट स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट. सो मैं हर बार बोलता हूँ कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट दिस डेज. बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर रिसेशन आया है, देयर इज अ रिसेशन पार्ट, वी आर नॉट फाइंडिंग जॉब्स एट ऑल. मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग क्लासेस ऑफ लाइक सेल्सफोर्स, टेस्टिंग एंड अदर टेक्निकल पार्ट, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब. जिन्होंने भी फेक एक्सपीरियंस दिखाया होगा उनकी कंपनीज ब्लैकलिस्ट हो रही है, तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम आ रही है. जो भी फेक एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं वो 2 years 3 years का कर रहे हैं, और जो कंपनीज अभी कंसिडर कर रही है वो 4 years प्लस एक्सपीरियंस वाले ही कंसिडर कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेक एक्सपीरियंस पार्ट. एंड अल्टीमेटली इट इज इम्पैक्टिंग फ्रेशर्स बिकॉज फ्रेशर्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स. और सभी आईटी कंपनीज को ये एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए जो टेक्निकली स्किल्ड हो. Initially, 5 years back, when the rounds were happening of selection process, they were starting with the aptitude part, then GD, then personal interviews. One or another way, some companies are still taking this, but
Now the emphasis is more on technical part. So the complete session would not be related to only technical part, but as I am from computer science background, I can inform you, I can tell you much more details about this technical. बट ये जो रिज्यूम का सेशन जो सेशन है वो सेशन सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि जो जनरलाइज रिज्यूमे पार्ट होता है वो हर फील्ड में उसी तरह से डिस्कस होता है जो कि टेक्निकल इसमें है. सो हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन कंपनी प्लेसमेंट. तो इफ यू आर अ फ्रेशर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर डन विथ योर ग्रेजुएशन और अभी आप जा रहे हो कंपनी में अपीयर करने के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है. बहुत से जो बच्चे हैं वो आईटी सेक्टर के लिए या उनके सेक्टर के लिए टीयर 1 टीयर 2 जो सिटीज है वहां पे जाते हैं. तो मुंबई हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, तो ये जो कंपनीज के जो बड़े बड़े सिटीज है जहाँ पे कंपनीज अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज आर गुड, तो वहां पे वो जाते हैं. तो अगर कोई ऑफ कैंपस ड्राइव हो तो वहां पे आप देखोगे कि एक 20 या 30 जो पोजीशंस अवेलेबल होती है, जो वैकेंसीज अवेलेबल होती है, उसके लिए वन और अनदर वे समवॉट अराउंड 1000+ अप्लीकेंट्स आते हैं. मैंने ये भी सिचुएशन देखी है, आई हैव सीन दिस सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स वेर पुटिंग देयर रिज्यूमे इन वन बॉक्स एंड वहां पे कोई स्पेस नहीं रहती है बॉक्स में, तो वो उनका रिज्यूमे वहां पे दबा दबा के डालते हैं. इतनी यहाँ पे कंपटीशन हो जाती है. एनी ग्रेजुएट, ये अभी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि मिनिमल जो पहले 10th स्टैंडर्ड एसएससी स्टैंडर्ड या एचएससी स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ते थे, अभी वो मिनिमल ग्रेजुएशन तक तो कोई भी पढ़ लेता है. और सेल्स और मार्केटिंग के तो प्रोफाइल आपको या वैकेंसी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, एवरीवन इज सेलिंग देयर सर्विसेज. इवन यू कैन सी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, you will get to see many sponsored ads because digital marketing vacancies has grown tremendously. So digital marketing की वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा निकली है. जो टेक्निकल के बच्चे हैं वो सेल्सफोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, .NET कर रहे हैं, PHP कर रहे हैं, फुल स्टैक कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट का पार्ट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली मैक्सिमम जो है वो 10 जो है वो इधर जा रहा है. सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, एवरीवन, BCA, MCA, pharma, MBA, everyone really wants to go in IT sector just because they would like to have a good salary. And companies are attracting to the candidates, giving them a good package. Even our relatives are there, even our seniors are there who are getting a package of 15 lakh, 20 lakh, 25 lakhs in less than 5 years. So we are getting attracted towards that. And ultimately, everyone is going towards it, and that's why अगर 100 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हो तो विद इन 15 days या 1 month में आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू कॉल्स उतने नहीं आ रहे हैं, या 1 or 2 students only are getting selected. So I always say I never leave a home without water and my resume. It's a fact that you always should carry your resume with you. Now this is a 21st century scenario, and after COVID, we are carrying this in a digital form. So our email should be composed, वो रेडी रहना चाहिए आपका ईमेल, जिसमें सब फॉर्मेलिटीज या डिस्कशन लिखा रहना चाहिए, जो कवर लेटर की तरह काम करता है. और रिज्यूमे उसको अटैच होना चाहिए, सो दैट व्हेनेवर वी गेट एन ईमेल आईडी ऑफ एनी टैलेंट एक्विजिशन HR रिक्रूटर्स, वी कैन इजीली सेंड टू देम, राइट? Okay. So if you got it, flaunt it. See, you are selling to yourself, right? If you have got it, you need to flaunt it, because whatever the resume that you are making, ultimately you are showing your skills only. You are showing your extracurricular activities. You are showing your percentages. You are showing your hobbies. You are showing your achievements. You are showing your awards. So ultimately, you are trying to sell yourself, right? That these are the skills that I have, these are the awards I achieved, these are the extracurricular activities I was involved in, and you can take it, you can select me because I have all the skills. I am capable enough to
appear for this opportunity which you are offering, right? So आपके पास अगर कुछ है तो you have to flaunt it. Now, if you are a final year student, and what are the various opportunities which are available for the placement, for the placement that I would be telling you now. So there are 4 kinds of placement drives which can be conducted. The first one is on-campus drive. If you are a final year students, you are completely aware that many companies might be approaching to your colleges or not. कोई कॉलेज में जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनमें कंपनीज आती है और कोई कॉलेजेस में शायद नहीं आती होगी, लेकिन जो कंपनीज सिर्फ आपके कॉलेज के बच्चों के लिए आती है, those companies are called placement drives are called as on campus drive. What is off campus drive? अगर आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है और आपके जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है उन्होंने अदर जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी इनवाइट करा है, इफ he or she has invited other college students also, and they are also appearing for the placement drive conducted by your college, then it is called as off campus drive. So what is full campus drive? If your college has declared that we are open for this placement drive and anyone interested or eligible candidate can appear for this placement drive, यानी invitation देने की जरूरत नहीं है, clearly उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे ये वैकेंसीज अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे कंपनी आ रही है, जो भी बच्चे एलिजिबल हो and would whoever are interested they can appear for this placement drive. So वो सब बच्चे कंसिडर होते हैं यहाँ पे फुल कैंपस ड्राइव में. तो आपको 3 का डिफरेंस पता होना चाहिए. ऑन कैंपस ड्राइव यानी the companies which are coming for you only in your colleges. Off campus drive means the companies which are coming in your college and your college is inviting some other colleges students also for this placement drive. That is called as off campus drive. Full campus drive, the companies are coming in your college and whoever is eligible they can appear for the placement drive. तो वो होता है full campus drive. तो ये full campus drive कंपनी के प्रीमाइसेस में भी हो सकता है, जो वॉक इन जैसा रहता है, वॉक इन इंटरव्यू जैसा रहता है. एंड फोर्थ वन इज वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव. सो आफ्टर अ पैंडेमिक सिचुएशन वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव really hit well to everyone, and it becomes very easy to conduct a virtual placement drive. Why so? Because if someone would like to come to your college, if some HR would like to come to your college, then the college need to do a lot of things in terms of hospitality part. So if my college is in Maharashtra, somewhere in Nagpur, and HR is coming from Noida, and there are 3 HRs who would like to come to our college. So the flight ticket bookings, their accommodation part, traveling part, food part, everything need to be taken care. So the charges that would be required would be very high in a higher part. Even HR जो उनके काम रहते हैं बाकी छोड़ के उनको स्पेशली ये 2 दिन के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करने के लिए आना पड़ता है. सो इट इज लाइक एन वेस्टिंग ऑफ टाइम. और जो द चार्जेस दैट इज इनकर्ड बाय द कॉलेजेस इज आल्सो देयर. सो वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव बिकम्स वेरी इजी, जहाँ पे आपको ऑफलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट रिटर्न में लेने के जगह पे बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए हु आर असिस्टिंग टू द कंपनीज. यहाँ पे आप एप्टीट्यूड का पार्ट ले सकते हो. ग्रुप डिस्कशन बिकम्स इजी बिकॉज आप गूगल मीट या Zoom पे ले सकते हो, and further personal interviews are also conducted on Zoom only. So virtual placement drive थोड़ा easy हो गया है, cost reliable हो गया है और time consuming भी process वो नहीं रही है. तो ये है there are 4 types of placement drives which we discussed. अभी resume के कितने parts होते हैं? There are 3 parts of resume. Yeah, we can say that there are 3 types of resume. First one is chronological resume, second is functional resume, and third is hybrid resume. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ऑल दोस थिंग्स? लेट मी टेल यू. सो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे मींस व्हाट? द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे लिस्ट योर मोस्ट रिसेंट जॉब फर्स्ट. मींस जो एक्सपीरियंस है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिया गया है एज कंपेयर टू द स्किल्स. सो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपैक्ट दिया जाता है एज कंपेयर टू द स्किल्स whichever you have. So I can tell you that if I am making a chronological resume, I can be experienced candidate because
मोस्टली द क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे इज क्रिएटेड फॉर अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस का जो है वो लिखा जाता है, और ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी जो रिसेंट आपकी जॉब चालू है वो सबसे फर्स्ट में आती है, और जो आपकी जॉब लास्ट जॉब थी वो बाद में आती है. सो रिसेंट वी डिस्प्लेड फर्स्ट एंड द लास्ट वन वी शो इट इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नेक्स्ट इज फंक्शनल रिज्यूमे. सो मोस्टली जो फ्रेशर्स बच्चे रहते हैं उनके लिए फंक्शनल रिज्यूमे really helps lot, just because the skills, functional resume impacts more on skills as compared to the experience. So functional resume, also known as the skill based resume, it's a resume format that focuses on your professional skill test as opposed to work experience. So we are more like focusing on the skills as compared to the experience which you have. और यहाँ पे जो स्किल्स की बात आती है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स विच आर हार्ड स्किल्स एंड वन इज सॉफ्ट स्किल. हार्ड स्किल में जो आता है, जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्किल हो, दैट इज कंसिडर्ड एज हार्ड स्किल. एंड सेकेंडली जो सॉफ्ट स्किल रहती है, द लीडरशिप क्वालिटीज यू हैव, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज यू हैव, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज यू हैव, दोज आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट स्किल. तो हार्ड स्किल टेक्निकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करती है, और सॉफ्ट स्किल जो है वो आपके पर्सनल लेवल, जो ग्रूमिंग पार्ट है, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, उस पे ज्यादा एम्फोसाइज करती है. तो फंक्शनल रिज्यूमे में आपके पास स्किल्स है, ऐसी चीज है जो आप ज्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो. आपने अगर कोई अचीवमेंट्स हो, अवार्ड्स हो, तो यहाँ पे ज्यादा हमारे डिस्प्ले होंगी. थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन रिज्यूमे. It is ultimately a hybrid model, hybrid part of resume, where chronological resume and functional resume coming like together. You are showing your experience part and also your professional skills as well. So if you have skills, you are flaunting there, as well as work experience too. So there are three types of resume, as I told you. The first one we spoke about is chronological resume, second is functional resume, and third one is a combination of both. For a reference, I have shown here some pictures through which you will get to know about the different kinds of resume available. Now, which are the different types of companies? Now, many companies are there. It is not only related to the IT companies, but manufacturing sectors are there. Pharmaceutical companies are there. Every field is having their own company which is manufacturing or providing the services. But some of the common company groups you would be receiving during campus placement, or I can say after getting pass out, the companies through for which you would be appearing. So first one is product companies. Product companies means you might have seen the products like Microsoft Office, where you are working on Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint presentation. One more example would be like Adobe PDF Reader, where we are opening our PDF through that product. If my file is compressed and if I want to open that compressed file, I would be using the software called WinRAR or WinZip, which help me to extract my files. So WinRAR or WinZip becomes one product. If I want to watch a movie and I don't have media player, so I would be taking a help of Windows Media Player, VLC Media Player, or any other media player which is available in the market. So these are nothing but products, and those products are developed by developers. So if some company is making any product, those companies are called as a product companies, and developers are getting a good salary package in those companies because they are not focusing more on services, they are focusing on the product which they have. It is applicable to other sectors as well. If it is a pharmaceutical company, if it is electronics company, if someone is making a semiconductor chip, if someone is making any processor, if someone is making any device, so all those companies are considered as a product companies. Second is IT or tech service companies. If you are seeing some banking softwares, अगर आप किसी बैंक में गए होंगे, and if you are seeing their software जहाँ पे आपके RTGS ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर या बाकी के जो भी फैसिलिटीज है, मोबाइल बैंकिंग, फिक्स डिपॉजिट, जो ये बैंकिंग के एम्प्लॉयज करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है कोई ना कोई बड़ी कंपनी ने डेवलप करा होगा.
तो SBI का उनका सॉफ्टवेयर है, या अदर बैंक्स जो है जो IBPS के अंडर एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वो सभी बैंक्स का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है. दो सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड बाय सम कंपनी. जो गेट की एग्जाम कंडक्ट करी जाती है, दैट गेट एग्जाम, द कंप्लीट प्लेटफॉर्म, द कंप्लीट सर्विसेज फॉर एग्जाम कंडक्शन, फॉर taking your fees, for doing registration form part. So everything is taken care by TCS company. So TCS, Infosys, these are like service companies which is offering services as well. Even Tech Mahindra is also offering services. So the companies which are providing this kind of services as coming under this IT or tech services companies part. Third is MNC. If my company is having branch office in some other country, I can say that company as MNC company. MNC company means multinational company, where the company's offices are available in more than one country, right? So अगर मेरा partner is working in Australia, तो ऑस्ट्रेलिया में वो वर्क कर रहा है, मैं यहाँ पे इंडिया में वर्क कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली आई कैन से यस माय कंपनी इज MNC कंपनी. बट जो MNC एक्चुअल कंपनीज रहती है वो बड़ी कंपनीज रहती है, जिनके ब्रांच ऑफिसेज इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, दे आर अवेलेबल इन more than 50 countries, 70 countries, let's say. Fourth is startup. Startup means the companies which just started and asking for a fund or just got a fund. तो एक छोटी कंपनी है जिनका छोटा आइडिया है और अभी वो ग्रोइंग फेज में है. जैसे फ्यू इयर्स बैक उबेर, देन ओला, जोमेटो, स्विगी, these were the companies which were startup companies. अभी वो कंपनीज बहुत बड़ी बन गई है. जैसे बायजूस भी स्टार्टिंग में जब छोटी कंपनी थी, 10 एम्प्लॉयज होंगे, 20 एम्प्लॉयज होंगे, उनकी आइडिया अबाउट टू स्टार्ट होंगी, उन्होंने फंडिंग नहीं उठाई होंगी, तो उस टाइम पे वो एक छोटी कंपनी थी जो उनके आइडिया पे वर्क कर रही थी, जिनका एक ही ऑफिस होगा, और अभी उनका जो एक्सप्लोर है वो बाकी है. तो those companies are called as startup companies. It's always been said that you will get to learn many things in a startup, because startup में employees कम रहते हैं और टास्क ज्यादा रहते हैं. So you get to know many things compared to the MNC company in startup. Fifth is core companies. Core companies means what? If I am a computer engineer and अगर कंपनी मेरी कोई टेक्निकल है, तो वो कंपनी के लिए अगर मैं इंटरव्यू देता हूँ तो वो मेरी कोर कंपनी हो जाएगी. अगर मैं फार्मेसी B.Pharm हुआ बच्चा हूँ और मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जॉब लगी है, तो वो लेकिन अगर मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं एक मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, तो दैट इज लाइक नॉन कोर प्रोफाइल, नॉन कोर पोजीशन. वी कैन नॉट से नॉन कोर कंपनी, बिकॉज एक कंपनी में अलग अलग प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन वो मेरी नॉन कोर पोजीशन हो जाएगी. अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर का पार्ट पर्सन हूँ, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई करता हूँ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में लेट्स कंसिडर कि डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो वो मेरी नॉन कोर कंपनी हो जाती है. इट विल नॉट बी अ कोर कंपनी फॉर मी. एंड लास्ट वन इज नॉन टेक कंपनीज और पोजीशन, आई कैन से. तो वाइस वर्सा ही हो जाता है. नॉन टेक कंपनीज मीन्स द कंपनीज which are not relevant to my field are called as non-tech companies. So these are like 6 types of companies which are available across the globe. Okay. Now let's understand what is ATS. So these days ATS बहुत ज्यादा कहा जाता है. पोस्ट पैंडेमिक जो बच्चों ने कुछ एक्सपीरियंस के पार्ट में, जिनको यानी अच्छे से स्किल नहीं आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या उनके जो कोर फील्ड है उसकी, बट स्टिल दे आर अप्लाइंग. मार्केटिंग का बच्चा अगर डेवलपमेंट के पार्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इफ ही इज अप्लाइंग फॉर IT जॉब, so that time it become very difficult for HR to segregate those resume. If I am looking for a Salesforce developer part and I want people who are experienced in Salesforce profile, but somehow other people are also applying for the same profile and I am getting thousands of resume, so how can I segregate those thousands of resume? It becomes very difficult for a single person to segregate those resume. It will take a lot of time to like wind up that profile.
तो जो पोजीशन है वो मुझे फुलफिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर thousands of resumes are available. So that's why ATS came into the action. ATS is application tracking system, where if अगर हमारे रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स हो जो वो जॉब के लिए रिलेवेंट लगते हो, तो उस टाइम पे वो एटीएस हमारा जो रिज्यूमे है उसको एक स्कोर देगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे that there is a vacancy for Java developer, and they are looking for people who have problem solving skill, who have experience in Java development part, Spring part, and some other languages as well. And if I have mentioned in my resume about Java, interpersonal skills, problem solving skill, decision making skill, and I have experience in Java development part. So what ATS will do, it will try to check those keywords. तो मेरे जावा डेवलपर की पोजीशन है, ये मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अभी रिज्यूमे में मेरा एटीएस का सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि वहां पे जावा लिखा है क्या, हाउ दे मेंशन अबाउट जावा, इज देयर एनीथिंग मेंशन अबाउट डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस इन जावा डेवलपमेंट. सो एटीएस वर्क्स लाइक दैट. तो ये थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे मुझे सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है. अल्टीमेटली एटीएस विल हेल्प मी फॉर दैट. और जो भी 50-60 रिज्यूमे निकलेंगे जिनमें ये कीवर्ड्स मेंशन है, तो वो कीवर्ड के हिसाब से मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए जाएंगे. सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट ऑलवेज से कि सर मैं अप्लाई करता हूं, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आता. आई ऑलवेज अप्लाई फॉर द पोजीशन बट आई नेवर गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एचआर. That is the reason ATS, around 98% of the companies which are in 500 top companies, or we can say fortune companies, they are using ATS, and slowly every company is using this ATS platform. If they don't have their independent ATS platform, they are taking third party help. Like for example, JobScan is a company, is an organization which is assisting all the companies to give this ATS platform. So we need to crack that ATS. So there are, as I said earlier, there are two types of skills, hard skill and soft skill. Everyone asks me like, sir, what exactly I should mention? So you should not have one resume. I always say to all the students that you should not have a one resume. Everyone should have like couple of copies of resume or versions of resume. अगर मुझे मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना है तो मेरा मार्केटिंग का एक रिज्यूम तैयार होना चाहिए जिसमें सभी मेरे स्किल्स या जो डिटेलिंग है वो मार्केटिंग के रिलेटेड होनी चाहिए. इफ आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो माय रिज्यूमे शुड बी लाइक दैट. तो as per the roles and responsibilities shared in a job profile, according to that my resume should be available. तो एक ही रिज्यूमे एटीएस के सॉफ्टवेयर की वजह से सभी पोजीशन, सभी जॉब प्रोफाइल को आप अप्लाई नहीं कर सकते. यू वोंट गेट ए इंटरव्यू कॉल इफ यू वुड बी डूइंग लाइक दैट. So you should be prepared with the various versions of your resume, software developer -myname.pdf, and in that PDF where my resume is there, I have shown my all the skills which are related to this software development part. I have shown my hard skills where I have a lot of knowledge over the programming languages. Second version of my resume, if I would like to apply for a software tester part, then my skills should be related to the testing part where I have done a project of testing. So my different versions of resume should be there if you would like to get a job, right? If you are a fresher, if you are an experienced candidate, it goes same for that, because this ATS, even if you have talent, even if you have skill, this ATS software is considering only the keywords part. So whatever the roles and responsibilities job description showing, you similarly you need to generate some keywords, and those keywords you need to add it in your resume. So what is hard skills? All your technical skills comes under this hard skill part. What is soft skill? All your personality development part comes under this soft skills, where you are showing your teamwork, problem solving, decision making, time management, adaptability. Those are soft skills. But if you have those soft skills, so ultimately the interviewers would be asking the same question to you. For example, if you are coming late to your interview and you are mentioning
time management as a soft skill part, as interpersonal skill in your resume, then it makes a difference. So HR would like clearly would understand that these skills are completely wrong. If you are mentioning punctual in your resume and you are coming late to the interview, then it is somewhat showing different side of you, right? So this is the clear difference between hard skill and soft skill. So let's take an example. If in any job description, अगर एक कंपनी में कोई जॉब है और वो जॉब प्रोफाइल के लिए उन्होंने ये डिजायर स्किल मांगी है कि दैट यू आर एबल टू मेक अ डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, you are able to empathize with the customers, you are a team player, and requirements are 2 to 5 years of experience working with the customers in a technical role, excellent written and verbal communication, and you should have a experience with these software tools, Jira, Zendesk, Salesforce, or other support tools, right? So these are the requirements which is been shown by the HR. They are looking for these kind of requirement and desired skill in a candidate. सो इससे मेरे हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल किस तरह से लिखी जाएंगी कि इन्होंने कहा है कि मुझे एक्सपीरियंस यू शुड हैव विद जीरा, ज़ेंडेस्क, सेल्सफोर्स, यू शुड बी टीम प्लेयर, you should have excellent written and verbal communication, and 2 to 5 years of experience working with the customers in a technical role. So according to that, these are the hard skills and soft skills made by me. That my hard skills would be providing customer support, I have product knowledge, I have worked on Jira, Zendesk, and Salesforce tools. My soft skills would be decision making, written and verbal communication, teamwork and collaboration, and empathy. These are my soft skills. So इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो मेरे कीवर्ड्स निकले हैं, उसी कीवर्ड के हिसाब से मैंने हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल बनाए हैं. तो अल्टीमेटली इफ ATS would be tracking my resume, I would be getting a good score in ATS and my resume will get shortlisted for sure. I hope you all are understanding this thing. Right? So how to approach for companies? So everyone is asking me about how to approach for companies. So let me tell you, there are 5 different ways, according to me, which help you to find a job. The first one is LinkedIn. LinkedIn is the best thing where you can search for the vacancies. We're going to take one more webinar on how to make your profile on LinkedIn and how to get a job through LinkedIn. We're going to conduct one more webinar on that. So LinkedIn पे आपका प्रोफाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन वुड बी जॉब पोर्टल्स. जॉब पोर्टल्स जो naukri.com है, monster.com है, तो वहां पे आप आपके जॉब पोर्टल्स पे आपके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो. थर्ड वन वुड बी रेफरल. सो रेफरल यू विल गेट इट फ्रॉम योर सीनियर्स or from your relatives who are working in a company, and most easily you would be getting all those referrals on LinkedIn because many employees are there who are offering referrals, because ultimately it is helping them also. They are getting a bonus from their company if someone is referred by them and if he or she is joining the company. Fourth one is job consultancy. Personally, I would not be recommending this job consultancy part because these days job consultancy is offering training first, asking for the charges and committing that they would be giving us the 100% job, but they are not giving at all. So it becomes very difficult. So our money is also gone and we are not getting a job. So job consultancy, I would not recommend these days. Fifth one is company portal, but also it is also difficult for us now to like check every company. There are like thousands of company available and every year new companies are coming in our India and fixing their position here and opening their vacancies. And it's very difficult for me to check every company's portal. So much easier would be to follow the pages which are available on social networking site like LinkedIn. So there you would get all the like companies pages where you can follow, and they or the people who are working in their company, they would be giving us the information about the vacancies which are available in their company. Now the placement process, how it goes, one or another way, some the process would be changing for every company. Some companies would be taking email writing part, some companies would be taking would not be taking a group discussion part and directly landing to us on technical round 1 and technical round 2. But initially
if it is a campus drive, then the presentation about the company goes, then written exam happens, then group discussion happens, then technical interview happens, and final would be the HR interview, which only checks for the verification of documents and the further process of joining. Now the preparation to start from now, yes, resume making, the aptitude part if you are a fresher, but these days they are looking mostly on the technical parts. So prepare your technical well, or if you are looking for a non-technical position, then just improve your interpersonal skills, improve your communication skill, and it will also impact these technical fellows as well, because 85% technical would be required and 15% is your communication skill, how you are attracting to HR. So what is the difference between resume, CV and biodata? So biodata, let's clear, you must be having idea about the biodata. अगर शादी का कोई right candidate हो, if he is a male or female, and उनकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो डिस्प्ले बेसिकली बायोडाटा में होती है. तो मैरिज के लिए बायोडाटा, ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. बायोडाटा हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नहीं यूज होता है. सो रिज्यूम वर्सेस सीवी में ज्यादा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो रिज्यूम या सीवी में जो डिफरेंस है, सीवी इज कॉल्ड एज करिकुलम विटे एंड रिज्यूम इज प्रोनाउंस एज रिज्यूमे. ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू समराइज. तो टू समराइज यानी उसका जो भी हमारा पूरा डिटेल्स है उसका एक समरी बना के देता है. तो लियोनार्डो दा विंसी, इसका रिज्यूम जो वर्ड है, जो है रिज्यूमे, आई कैन सी इन अ फ्रेंच लैंग्वेज. तो रिज्यूमे ये जो वर्ड है वो लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उनके थ्रू ये वर्ड जनरेट हुआ था. इस तरह से कहा जाता है 1460 में. तो रिज्यूमे वर्ड वहां से आया है. और करिकुलम विटे जो है, करिकुलम विटे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा यूज होता है. तो कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन दिस रिज्यूमे एंड सीवी. रिज्यूमे इज फॉर फ्रेशर्स, सीवी इज फॉर, आई कैन से, द एकेडमिक पीपल. हाउएवर रिज्यूमे कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपीरियंस पीपल एज वेल. लेकिन रिज्यूमे जो रहता है वो 1 या 2 पेजेस का रहता है. सीवी कैन बी मोर देन 2 पेजेस, जिसमें आपकी एकेडमिक स्किल, पब्लिकेशन पार्ट, कॉन्फ्रेंस अटेंडेड पार्ट ज्यादा रहता है. तो जो एकेडमिक प्रोफेसर्स रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एचओडीज, प्रिंसिपल्स, डीन, चांसलर, इनके जो प्रोफाइल्स रहते हैं वो सीवी में कंसिडर होते हैं, क्योंकि उनके पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस अटेंडेड, ट्रेनिंग्स अटेंडेड ज्यादा रहता है. रिज्यूमे वुड बी फॉर 1 or 2 pages. It can be for experience or it can be for fresher. But these days there is no differentiation between resume and CV. कोई भी आपको CV बोलेगा, कोई भी आपको resume बोलेगा. तो ये दोनों नॉर्मली ऐसे ही यूज होते हैं, इसमें कोई भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. जैसे आपके रिज्यूमे में लिखा रहता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट. तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये दोनों में अगर मैं किसी को पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, सो नो वन वुड बी टेलिंग मी द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट. सबको लगता है कि ऑलमोस्ट दोनों भी सेम रहते हैं. लेकिन जो हॉबीज रहते हैं वो ज्यादा आपकी एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है, और जो इंटरेस्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. जैसे मुझे सिंगिंग का इंटरेस्ट है, आर्ट का इंटरेस्ट है, लेकिन हॉबीज में मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, गिटार प्ले करना अच्छा लगता है. तो ये उसमें माइनर डिफरेंस हो जाता है. बट नॉर्मली हम हॉबीज, इंटरेस्ट को दोनों को सेम कंसिडर करते हैं. उसी तरह से रिज्यूम और सीवी को कंसिडर किया जाता है. इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है. someone would be asking you CV, आपको सेम कॉपी देनी है. if someone would be asking you resume, आपको भी सेम कॉपी देनी है. ठीक है. अब जैसे मैंने हॉबीज एंड इंटरेस्ट की बात की, तो टॉप 10 हॉबीज एंड इंटरेस्ट टू पुट इन योर रिज्यूमे वुड बी द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, राइटिंग, ब्लॉगिंग, लर्निंग लैंग्वेजेस, फोटोग्राफी, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, रीडिंग, मेकिंग म्यूजिक, yoga, right? So these can be 10 hobbies and interests that you can incorporate in your resume. कुछ लोग कहते हैं कि हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्यों डालना है, इसका कुछ रिलेवेंस नहीं बनता. बट इफ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ यू वांट टू लाइक enter into this corporate field, you should have your hobbies and interests, because it also shows your extracurricular activities. So you should add your hobbies and interests. If you are having lot many things like awards, achievements to show, to flaunt, then you can skip this part. But if you don't have any other content to mention, and if you are not fulfilling 1 or 2 pages, then go ahead with the hobbies and interests. So this is like 8 highest paying IT companies in India. ये लिस्ट जो है वो शायद आगे पीछे हो सकती है, बट एक जनरलाइज मैं आपको यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ कि
अगर गूगल हो तो उनकी सैलरी क्या रह सकती है एज अ फ्रेशर, एज ए इंजीनियर. एंड इफ इट इज अ सीनियर इंजीनियर देन द पैकेज वुड गो बिटवीन 9 to 41. अब आप बोलोगे कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला है, तो बहुत मिनिमल रहते भाई. एक या दो बच्चे लगते हैं 10 लाख बच्चों में से जिनको 1C या 2C का पैकेज मिलता है. बाकी जो नॉर्मल है उनको तो एक एवरेज पैकेज मिलता है. इफ यू आर अ फ्रेशर देन you would be getting a package from 1.80 if it is a small company to 8 lakhs, 9 lakhs, let's suppose. And if you're experienced, then it depends on the company and the profile you are working in. Now, one more question mostly students ask me, what is the difference between salary package and job profile? सर मैं सैलरी पैकेज सिलेक्ट करूँ या जॉब प्रोफाइल सिलेक्ट करूँ? जैसे मार्केटिंग की कंपनी है फॉर एग्जांपल बायजूस, वो ऑफर करती है आपको 9 लाख का पैकेज, बट नॉन टेक्निकल पोस्ट है. लेकिन एक टेक्निकल कंपनी है विप्रो जो मुझे 3.20 का पैकेज ऑफर कर रही है. सो विच कंपनी आई शुड गो फॉर? तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर अ जॉब प्रोफाइल, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि 1 साल 2 साल आपकी स्ट्रगल रहेंगी इफ यू आर अ फ्रेशर. आफ्टर दैट it becomes easy for you to switch company to company. I have seen many students who worked in a marketing company just that they felt that they are getting a good salary. However, variable allowances थी उसमें थे, फिक्स सैलरी कम थी और इंसेंटिव या बोनस ज्यादा था जो आपके टारगेट अचीवमेंट पे था. So after 2 or 3 years of work done in that marketing field, they have switched to technical profile. So that non-technical profile you cannot show in a technical world. So that's why I would recommend you to go for a job profile and not for the salary package if you are a fresher. Next part. Many students ask me, sir, मैं मेरे resume में photo add करूँ या ना करूँ? Shall I add my photo there or not? So I have suggested here few pics. If you want to add your photo, then it should not be like that. And if you want to add a photo, then take these examples where you are very groomed. आपका जो स्क्रीन पे जो फेस है, it should be display well, right? अब जो यूके है, यूएस है या आयरलैंड है, वहां पे रिज्यूमे में फोटोज नहीं डाले जाते हैं जस्ट बिकॉज वहां पे थोड़ा सा कलर के लेके थोड़ा इश्यूज रहता है. एंड एचआर वुड नॉट ऑल्सो बी रिक्वायरिंग योर फोटो टू कंसिडर द टैलेंट दैट यू हैव. So it is not necessary at all to put your photo in your resume. It is not mandatory at all. It's optional. So if you would like to add, you can go ahead. If you don't want to add, it's completely fine. आपके कुछ points यहाँ पे कटने वाले नहीं है. See, if you would like to go ahead with this photo, then the photo should be representable and professional. Not like this. Okay. There are some employability tests also that can help you to land a job. And third-party companies are there which are like taking exams and making your score well. जो स्कोर से आपको कुछ कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है. आजकल तो फेस प्रिप है या जिग्स फॉर गिग्स है, वो भी खुद के कुछ टेस्ट लेते हैं, कंपटीशन अरेंज करते हैं और अगर कोई कंपटीशन में जीत जाता है तो वो अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए हायर हो जाता है. इस तरह के भी कंपटीशन आजकल कंडक्ट किए जाते हैं. तो यू कैन टेक दिस एग्जांपल. समवॉट फीस में थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कंपनीज की अपॉर्चुनिटी इनके थ्रू आ सकती है. There are some courses that you can do would be from, if you are from IT sector, then you can go ahead with the C, C++, Java, PHP, Salesforce, Python. And if you are from other field, you can take this screenshot. So as per that, क्योंकि हर 2 साल के बाद एक टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो it becomes very difficult to tell you that for which technology you should go. And considering the market of ChatGPT, many like jobs are getting layoffs. Many people are getting layoffs क्योंकि ChatGPT ने उनको replace कर दिया है. Content writing becomes so easy with the help of ChatGPT. Now I would like to show the resume part where we can discuss about the things which you should do and things which you should not do. So let me share my screen.
I hope you can see the screen where I have shown you a simple resume part, जहाँ पे black and white में मैंने resume बनाया है. Usually I recommend all the students to go ahead with the A4 size paper. The font जो type होना चाहिए वो either it can be Times New Roman or a Calibri. The font size should be between 10, 12 to 13 maximum. Okay, so it can be, if it is like in a small words या इस तरह के sentences हो तो use 12 font size. और अगर bold में कुछ titles हो तो उसको आप एक तो capital में कर सकते हो. You can use 14 font size या 12 में ही आप उसको capital कर सकते हो. तो A4 size में बॉन्ड पेपर पे अगर आप प्रिंट लेते हो तो बॉन्ड पेपर पे लो, जो A4 साइज का जो जेरोक्स का पेज रहता है उस पे ना लो. दैट आई वुड रिकमेंड यू. ओके, तो ये एक सिंपल पेज हो गया है. आजकल आई नो देयर आर लाइक लॉट ऑफ कलर्स अवेलेबल ऑन रिज्यूमे दैट आई वुड आल्सो डिस्कस, बट some things that I would like to tell you here are, first of all, your name would be coming. Okay, the next would be the address. Address is not mandatory, it's optional. If you would like to add here, you can add it here, or else you can skip that part. Third, next one would be email. So here you can mention your email ID. Your email ID should have your name, first name and last name. तो जो हम कॉलेज में बनाते थे ईमेल आईडी, तो उस तरह की ईमेल आईडी आपको नहीं बनाने हैं जिसमें आपका नाम भी नहीं आता है. तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम शुड बी देयर इन योर ईमेल आईडी. नेक्स्ट वन वुड बी योर मोबाइल नंबर or phone number, I can say. So mobile number, where it is necessary to add your country code. So country code plays an important role because अगर कोई कंपनी हो जहाँ पे आपकी इंटरव्यूज यूएस टाइम में ले जाते हो या यूएस रिक्रूटिंग की पोजीशन हो जिसमें नाइट शिफ्ट के वर्क हो, तो वहाँ पे कंट्री कोड इंपॉर्टेंट है इफ दे आर मेकिंग यू टेलीफोनिक इंटरव्यू इज देयर. दे द करियर ऑब्जेक्टिव. करियर ऑब्जेक्टिव में आपको दो चीजें ऐड करनी रहती है कि आपके पास कौन सी स्किल है और कंपनी को एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट यू हैव एंड व्हाट एग्जैक्टली कंपनी वांट्स. सो दिस टू थिंग्स शुड बी एडेड इन योर करियर ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. So educational qualification should be in a reverse chronological order, where the recent degree should be display first, then it goes for the diploma or the HSC you did, then lastly it would be SSC. So class 10 would come like at last, then HSC, then your degree, and if it is a post graduation that will come first. तो recent वाला सबसे पहले रहेगा. अगर आपके परसेंटेज बहुत कम है, and if you don't want to show your percentage just because you feel that because of the low percentage my resume would not impact much, so rather than percentage, what you can do, you can add the class. If you have like first class marks, you can add first class. If you are distinction, you can add distinction. If it is a second class marks, like between 50 to 60%, we usually consider it as a second class, so you can add a second class. अगर आपके फाइनल ईयर में एग्जाम में हो तो यू कैन सिंपली ऐड परसिविंग या अपीयरिंग. सो यू डोंट नीड टू शो योर परसेंटेज. इवन इफ यू फील दैट योर कॉलेजेस इज नॉट सो गुड एंड यू डोंट वांट टू शो योर कॉलेज नेम, तो सिंपली यू कैन ऐड योर यूनिवर्सिटी नेम. तो अब एसएससी जो 10 क्लास रहता है वहां पे तो यूनिवर्सिटी नहीं रही थी, तो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन ऐड, तो यू कैन ऐड योर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, Rajasthan state board. So whichever state board you belongs to, you can add that state board. Even same goes for class 12. अगर डिप्लोमा हो तो उनका तो अलग ही रहता है, MSBT रहता है, हर स्टेट का अलग रहता है, तो वो आप बोर्ड वहां पे ऐड कर सकते हैं. टेक्निकल स्किल्स, डू नॉट ऐड टू मच टेक्निकल स्किल्स. जिस तरह का जॉब है उसी की टेक्निकल स्किल्स आपको डालनी है, बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल नहीं डालनी है. इफ यू आर एडिंग टू मच टेक्निकल स्किल एंड इफ यू हैव elementary level of knowledge about every technical skill, then HR would be asking many questions to you and it is very difficult to face that interviewer. तो if you are at elementary level, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आता है, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से आपको आपकी टेक्निकल स्किल में मॉडिफिकेशन करनी है. यही मैं कह रहा था कि जो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रिज्यूमे है, इट शुड डिस्प्ले लाइक दैट. नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप्स. If you have done any internship, it really helps a lot, just because it is nothing but like a sort of job you did for 3 months, for 6 months.
You have gained that corporate experience. So you are pretty aware with the situation, the environment that corporate is having. So internship really helps a lot. Next, academic project really helps a lot because you have worked on somewhat development part. तो वो जो आपका टेक्निकल पार्ट है यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले होके आएगा. तो सिंपली यू नीड टू ऐड योर प्रोजेक्ट टाइटल, देन द डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी more than 3 to 4 lines, and it should be aligned in a justified way. It should not be like left aligned, center aligned, or right aligned. It should be justified. Everything should be like justified only. Okay. Next comes curricular activities. So for example, if you have got like any certificate, here it is shown certificate for secretarial position in Rotary Club of Asset between 2011 to 12. So rather than mentioning like this, you can mention somewhat in a representative way, like a participation in a secretarial position, participation in Rotary Club, and secured a secretarial position after competing with 120 students who appeared for this position. So it helps to create a attraction that out of 120 you are selected for that secretarial position. So in this way, you need to add a co-curricular activities. For example, if you have achieved some position, first position अगर आपको किसी में बैडमिंटन में मिल गई है, तो instead of writing won first position in badminton, you can write it as secured first position in a badminton competition held in this college. अगर ये नेशनल होगी, स्टेट लेवल होगी, तो आप उसमें स्टेट लेवल, नेशनल लेवल डाल सकते हो. अगर इसमें 100 टीम्स आई थी जिसमें से आपकी बैडमिंटन की टीम जीती, तो उस तरह से आप डाल सकते हो कि अमंग 100 टीम्स आर टीम गॉट सिलेक्टेड. तो एक अल्टीमेटली मुझे कहना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको रिप्रेजेंटेटिव वे में ऐड करना है. ये जो मैं आपको रिज्यूम का सैंपल दे रहा हूँ, इट इज वेरी सिंपल, एंड आई फील दैट सिंपल वुड बी मच गुड रादर देन क्रिएटिव. अगर क्रिएटिव में मिस्टेक्स हो रही है तो सिंपल उससे ज्यादा अच्छा है. केयरलेस से अच्छा यहाँ पे केयरफुल होना बहुत इजी रहेगा. नेक्स्ट वन वुड बी हॉबीज एंड इंटरेस्ट. वॉट एवर हॉबीज एंड इंटरेस्ट यू वुड बी एडिंग, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज HR वुड बी आस्किंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मेंशन्ड प्लेइंग क्रिकेट, so they would be asking what is the distance between these two stumps, where the third man is located, which is the largest Indian cricket ground. So ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड. अगर आपने डाला है रीडिंग बुक्स, so which is the last book that you read? Who is your favorite author? Tell me 5 authors names and their books name. तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसको आपको टैकल करने के लिए आपके हॉबीज उस तरह के होनी चाहिए. नेक्स्ट इज पर्सनल डिटेल्स. So if you want to add a date of birth, you can add it. If you feel that there is a lot of experience gap or education gap, then if you didn't add date of birth, it is completely fine. Date of birth would be optional. Gender, you can add. Language known, yes, it is necessary, because if you have more than 3 language known, then it would be easier for you. It will really help. Correspondent address, yes, it is required, because if someone would like to send something to your address, then it becomes easy. Even like laptops, if you are getting selected, they would be asking for your correspondence address to send mobile and laptop to your home. Marital status, not so required, so it is optional again. Mobile, if you are mentioned above, then you don't need to add it again. Declaration, if you are fresher and if you have space, you can add it. Otherwise, declaration is also not necessary. So this is like a very simple resume that I shared to you. If you have any suggestions, you can let me know. And even if you have any doubts, you can just approach to our team through which you got these details of webinar, and they would be assisting you with your resume part and the corrections and the suggestions which we have. Now, I would like to show some tools which will help you to easily create your resume. As I said, that this is 21st century where artificial intelligence playing a very important role.
So there are some AI tools as well, where you simply need to add your details and it will help you to create your resume in a various templates. Some are free, some are paid. So it's up to you which model you would like to take. Like for example, I would be starting with a Canva. So here on Canva, you would be getting many templates for a fresher. If you simply type with a fresher resume in a search box, you will get to see, let me add fresher resume. You will get to know about the various templates which are available. And those are like colorful, very attractive. You simply need to change your details and you will get your resume created. However, some paid subscriptions are available there. You need to pay for that. After that, one more website is available, Zety.com. Now, Zety.com is also a resume builder website where you can build your resume. Simply go to the resume part and click on resume template. And you will get a various resume template where you can use those templates and make a changes. So first resume which I shown to you, it was a simple black and white resume. Now this resume is like an attractive, I can say the colorful part. So you can also go for this kind of resume as well. So simply click on I want to create a new resume. Here you will get to see the template. If you'll add your name, here the changes would be happening. So whatever you would be adding here, all things would be displaying on your template part. So real time, the changes are happening here. So you can use this Zety.com also for your resume making. Apart from that, I have some more websites which are AI-based website. AI powered, I can say, which helps you to create your resume for free. Third is kickresume.com. Simply click on this website and you will get to see the resume part. You click on resume builder, click on create my resume. You need to do your login here. And with the help of various templates, you can create your resume. Next one is resumemaker.ai. Go on this website. It takes only 5 seconds to screen your resume. Write it well. Click on create resume. I earlier tried to create the resume here. So the best part about this website is what? If I am entering my all details, if I'm using or selecting one template where I am adding my details, it really helped me with all the templates. That means you need to mention your all details only once. And these details will be applicable to all the templates. So even if you'll change your template, those details will be reflecting on the new template. So you are getting a multiple options for template. For example, I have mentioned my only Mayur Boyer name over here and email ID. Now, if I'm changing my template, the details are still there, only the template is been changed. So I can get a different versions of resume simply by mentioning the details only once. So many options are available here. So you can create different versions of your resume in, I can say, only 5 minutes. And the last one would be resumeai.com. And by the way, resumemaker.ai is completely free of cost and it will help you to download the resume in a PDF format. So if you want like colorful and attractive 1-page resume or 2-page resume, you can go ahead with this website which I told you.
First one is canva.com, second is Zeti, third is kickresume.com, fourth is resumemaker.ai, and fifth one is resumeai.com. So I guess it is hang. So you can go for these resume templates. Many more websites are available. But those are giving us the paid subscription. So this was about the complete session. Now I would like to ask one question. If you can just mention in the comment box, the students or the viewers who are here, I would like to know your work experience in the number of years so that I can get a brief idea about the students who are appearing for this webinar are actually having the experience less than 5 years or 5 to 10 years or more than 10 years, or they are just a fresher candidates or pursuing in a final year. So just type in a comment box your work experience in a number of years. If you are a student, type A. If you are having less than 5 years of experience, type B. Or 5 to 10 years of experience, then you can type C. So you can mention it. So you will get, I will actually get an idea that the viewers who are watching these resume sessions are from which background. So there is a slight delay between the YouTube and the live platform which I am running. So you can just put it in a comment box so I can approach you through the chat boxes and the email IDs which you are having. So thank you so much for listening to this resume session. I hope you got a brief idea about how to develop a resume, what is the current marketing, current. Sorry, some technical issues were there. And many people says that there are a lot of layoffs happening. There are no jobs at all. But I personally believe if you have good skills, then you can enter into this corporate field and get a job. So thank you so much for listening to this session. Please do subscribe to our YouTube channel, and we're gonna come up with a few more webinars which will help you to understand this world of placement part. So thank you so much.